बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग करते हुए बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत 17,000 भारतीय लोगों को बचाकर लाया जा चुका है और 24 घंटे के अंदर भारतीय लोगों को लेकर 6 और फ्लाइट्स भारत पहुंच चुकी हैं। अगले 24 घंटे में 15 विमान भारतीय छात्रों को लाने के लिए रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड जाएंगे। एयरफोर्स का एक और विमान देर रात पहुंचेगा और अगले 3 घंटे में जो तमाम इंडियंस हैं उनको हर हाल में खार्किव छोड़ने की सलाह दी गई है, जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं। We now estimate that nearly 17,000 Indian nationals have left Ukraine's borders since our advisories were issued. This, of course, includes some Indians who had not registered with the embassy earlier. So the 17,000 is a pretty high number. As you remember, Foreign Secretary mentioned a number of, I think, around 12,000 yesterday. Flights under Operation Ganga have also increased sharply. During the last 24 hours, 6 flights have landed in India, taking the total number of flights that have landed in India to 15, and the total number of Indians who have returned on these flights to 3,352. I'm also happy to share that as many as 15 flights, remember 6 flights last 24 hours, but 15 flights are scheduled over the next 24 hours. Some of these are already actually en route. 15 flights. So 15 flights over the next 24 hours, some of which, as I said, are already en route. Indian Air Force aircraft have now joined Aap Ganga with the first C-17 flight from Bucharest, expected to return to Delhi or land in Delhi from Bucharest later tonight. 3 more Indian Air Force flights will be undertaken today from Budapest, Bucharest, and Rzeszów in Poland. Now, moving on to the situation there in Ukraine. The cities in eastern Ukraine remain areas of concern for us. Continuing violence there. There are encouraging reports that some students were able to board trains out of Kharkiv yesterday night, today morning, and we assisted in this process through the student contractors and other partners. As you know, we have been in communication with the Russian side regarding safe passage of our nationals from Kharkiv and other nearby cities. The advisory that has just been issued by our embassy a little while ago and also by us on the need for our nationals to leave Kharkiv immediately is on the basis of information received from Russia. We would urge all our nationals to leave Kharkiv immediately to the safe zones or further westwards using any means available, including on foot, and keeping safety in mind. Now, moving on to the western side or the western borders of Ukraine, you would have seen the advisory put out today morning by our embassy in Warsaw regarding the movement across the Poland-Ukraine border. Indian nationals were advised to head to the Budomier's border point for a relatively quicker entry into Poland, avoiding the Szeni-Medica border crossing that continues to be congested. I'm happy that that is actually working out quite well and more people are leaving through that. Of course, those who do cross the border on their own can directly proceed to a reception point on the Polish side that was indicated in that advisory. We are also trying to make arrangements for shelter and food in towns near the borders and requesting students not to go to those borders directly, as we said over the last couple of days. Now, with the arrival of Indian officials at the Embassy of India's Lviv office, this process will be strengthened and we should be able to assist people crossing the borders. A mechanism for issuing emergency certificates to those who have lost their Indian passports has been instituted. I think this will also help many Indian students. Evacuation through Slovak Republic and Hungary border crossings also is proceeding steadily. But we urge students there also not to reach the border points, for example, at Chop directly to avoid this long waiting times. They are requested to coordinate with our teams and follow the advisories.
I'm happy to share that evacuation through Moldova is also picked up, particularly after our team at Chisinau has become operational. From Moldova, evacuees are taken to Bucharest to catch the Ob-Ganga flights. On the border areas, as well as in capital cities of Ukraine's neighbors, I mean Bucharest, Budapest, etc., our teams have made arrangements for food and accommodation for evacuees till they depart from India. With the large number of flights that are now being organized, this period will shorten and hopefully soon they will be able to leave for India once they have crossed the border. Prime Minister's special envoys have reached the countries neighboring Ukraine, and you've seen the information on that, and are coordinating efforts firsthand there, and we will be sharing information on that also. I mentioned about our embassy, and I had received a few queries on this issue. The embassy was asked to set up a temporary office in Lviv, as I mentioned, to facilitate border crossings by Indian nationals. A substantial segment of our embassy team is now at Lviv for this purpose. The other segment, the location of the other segment of the embassy team is dynamic. तो ये विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ी बात बताई गई है कि रूस के कहने पर हमने खार्किव के लिए एडवाइजरी जारी की है और रूस से ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहां पर बमबारी होगी, इसीलिए रात 9:30 बजे से पहले भारतीयों को खार्किव से निकाल लो। तो ये वो साफ साफ भारतीय विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि ये रूस से मिली जानकारी के मुताबिक हमने एडवाइजरी जारी की है। इसका मतलब बता दिया गया है कि इतने वक्त के बाद वहां पर कोई बड़ा ऑपरेशन या बॉम्बिंग लगातार होने जा रही है, उससे पहले तक का वक्त है आपके पास अपने लोगों को निकालने का। बिल्कुल करनी। सौरभ जी, अब अगर देखें तो जो पश्चिम इलाका है वो तकरीबन सेफ नजर आ रहा है और यही कारण है कि सारे जितने मिनिस्टर्स हैं कम से कम बातचीत करके जितने भी अपने 2-3 हज़ार लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सब इकट्ठे हैं और जा रहे हैं। दिक्कत आ रही है पूर्वी यूक्रेन में और वो है खार्किव के इलाके में, जहाँ पे मुझे लगता है कि 200 के आसपास बच्चे होंगे जो फंसे हुए हैं। और जैसे एडवाइजरी मिली है, मुझे लगता है कि 6:30 बजे तक उन्होंने वक्त दिया होगा कि अंधेरे से पहले पहले ये जितने बच्चे हैं, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट्स दिए हैं वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और ये तीनों क्रॉसिंग पॉइंट जो रूस ने दिए हैं हमें कि यहाँ से अपने बच्चे या जो भी नागरिक है उनको निकालो, मुझे लगता है। जनरल साहब, जो बच्चों के मन में आशंका थी कि हमारे ऊपर अगर अटैक हो गया तो यानी वो अश्योरेंस कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से बिल्कुल 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 हम लोगों ने तो उनको बोला है कि धरती पकड़ो, जमीन पर लेट जाओ या किसी ट्रेंच में चले जाओ अगर ऐसे होता है। मुझे नहीं लगता है वो दिल खोल करके अपना बिल्कुल दे मस्ट हिट फॉर दोस 3 क्रॉसिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो विदेश मंत्रालय कह रहा है कि जो एडवाइजरी जारी की गई है ये रूस से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर की गई है कि 9:30 बजे से पहले भारतीयों को वहां से निकाल लिया जाए। 9:30 बजे मनीष इंडियन वक्त हुआ, उनके हिसाब से 6:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 9:30 बजे रात और उनके हिसाब से 6 बजे, क्योंकि 3.5 घंटे का अंतर है। सबसे बड़ी चुनौती है मेट्रो के अंदर और साथ में जो रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे छात्र हैं, करीबन 2 से 3 हजार की संख्या में, उनको सुरक्षित भेजा जाए। और इसीलिए जो अलग अलग मनीष सबवे टनल्स का भी जिक्र किया गया बाकायदा। सबवे टनल बहुत ही इमरजेंसी टनल है, मुझे नहीं मालूम इस समय सबवे टनल के बारे में जानकारी लोकल जो ऑन ग्राउंड इस समय बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको होगी या नहीं। लेकिन चुनौती इस बात की है कि बफर टाइम करीबन इस समय जो टाइम हो रहा है वो 6:46 है भारत के हिसाब से, और आप 3.5 घंटे पीछे, यानी 3 घंटे के इस अंतर के अंदर, यानी कुल मिला के 3 घंटे के अंदर अब उन लोगों को सुरक्षित पैसेज तक जाना होगा, नहीं तो रशियंस बॉम्बिंग करेंगे। इससे उनकी मंशा साफ दिखती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।